हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, आर्किटेक्चर एज पावर, फोर्ट्स एंड सेक्रेड प्लेसेस। आज बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आर्किटेक्चर्स, कुछ बहुत ही फेमस बिल्डिंग्स के बारे में। लर्निंग प्लान क्या है इस चैप्टर का? मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कैसे मॉन्यूमेंट आर्किटेक्चर है बच्चों? मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर इन डेक्कन एंड साउथ। उसके बाद सल्तनत पीरियड में कैसे थे मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर, मुगल पीरियड में कैसे थे, और हम पढ़ेंगे शाहजहां patronage of architecture, a case study. Now let's start the chapter. So there was an outburst of multi-dimensional cultural activity during Mughal rule, a tradition in the field of art and architecture created during this period. We find varieties of monuments architecture in different parts of the country. नाउ नॉर्थ इंडिया में बच्चों, नॉर्थ इंडिया के कुछ हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे जो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। The Rajput rulers were great patrons art. राजपूत रूलर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा आर्ट में यकीन करते थे, वो बहुत ही ज्यादा कला को महत्व देते थे। उन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स को क्रिएट किया है, बहुत सारे फोर्ट्स, टेम्पल्स और अदर वर्क ऑफ आर्ट को इंट्रोड्यूस किया है। Two distinct style of architecture found in temple of northern India. The style is characterized with the beehive-shaped tower called shikara. टेम्पल जो है ऐसे स्टाइल में बिल्ड की गई हैं जिनका डेफिनेट प्लान है बच्चों। द कांडारिया महादेव टेम्पल एट खुजराहो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल बिल्ट इन द स्टाइल। Beside the temples of Odisha at Bhubaneswar, Konark and Puri are other important example. Here we have how the chief features of the temples are the Garbhagriha, then we have Parda Shina, then we have Mandap or pavilion, then we have Antralaya, and then we have the Shikara is usually crowned by a picture-shaped kalash placed on the flat and thick disc called Amalaka. Here we can see Lakshmi temple in Karnataka. Then the temple resemble those of Rajasthan and Gujarat in their style. सोलंकी रूलर्स ने लिबरली कंट्रीब्यूट किया है टेम्पल्स ऑफ गुजरात में। द सोमनाथ टेम्पल, आई होप बच्चों आपने सोमनाथ टेम्पल के बारे में सुना होगा, वो फाइनेस्ट एग्जाम्पल है सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल का। द रूलर ऑफ ओडिशा, उनके पास ग्रेट पैशन था, वो बहुत ही पैशनेट थे बिल्डिंग टेम्पल्स के लिए। सो इधर आप देख सकते हैं बच्चों द परशुराम टेम्पल, द मुटकेश्वर टेम्पल, द राजा रानी टेम्पल वर्थ मेंशनिंग। The Lingaraj temple in Bhubaneswar is a perfect example of temple architecture. बच्चों, सेंट्रल एशिया में लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपके टेम्पल्स हैं खंडहर महादेव टेम्पल, पारसनाथ टेम्पल एक्सेट्रा आर वर्थ मेंशनिंग. Here we have monumental architecture in Deccan and South Indian. The Rajputa of Deccan, the Pallavas of Kanchi, the Hoysalas of Dwara Samudra and the Cholas of Tamil Nadu were great patterns of art and architecture. The Rashtrakuta rulers Krishna I built famous rock-cut Kailash temple at Ellora in the 9th century. The temple is adorned with sculpture depicting episodes from Ramayana and Mahabharata. This temple has been rightly called one of the architecture marvel of the world. The Rashtrakuta also built a rock-cut shrine of Shiva or the island of Elephanta, known for its famous sculpture. Then we have rock-cut monolithic temple बच्चों, जो रथ temple Mahamalapuram built by Pallavas stand a great specimen of artist genius. Here you can see बच्चों जो भी टेम्पल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आई होप कभी ना कभी आपने उन टेम्पल्स के बारे में जरूर सुना होगा या आपने विजिट भी किया होगा. Basic feature of the style are, then first we have Manam, that is Garbhagriha, then we have Mandapans, then मंडप होते हैं टेम्पल पे, then we have pillars, पिलर होते हैं. ऑलमोस्ट बच्चों जब आप टेम्पल देखो तो सभी टेम्पल एक जैसी लगती है कि पिलर्स होते हैं, गर्भगृह होता है और ऊपर मंडप टाइप का होता है. Then we have monumental आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. अब सल्तनत पीरियड में कौन कौन से आर्किटेक्चर बने बच्चों? तुर्क जो कि ग्रेट जीनियस आर्किटेक्चर थे. द मिंगलिंग ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रोड्यूस अ न्यू आर्किटेक्चर कॉल्ड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी बच्चों जो सिमेट्री थी, दैट इज हार्मनी एग्जिस्ट्स.
So beside, there is a blending of Hindu motifs and Islamic structure style. Most of buildings were made up of bricks and stones instead of marble. Here you can see this Gol Gumbaj of Bijapur. Then we have Qutub Minar, and it is built by Iltutmish. And there are several temples of Sultanate period. Then we have a huge artificial lake was built around by blocking the passage of Yamuna. Sloping wall known as Better, a striking feature of Tughlaq dynasty, Tughlaq architecture. So बच्चों इसी तरह से बहुत सारे आप देख पा रहे बहुत सारे मॉन्यूमेंट बहुत सारे आर्किटेक्चर के बारे में जिक्र हुआ है जो आज भी हमारे इंडियन प्रेजेंट का पार्ट है जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हुआ करते थे किसने बनाया कैसे बनाया क्या मेन फीचर्स होते थे हम यही पढ़ रहे हैं the Gol Gumbaj of Bijapur made the Bahmani rulers the biggest dome in Asia. Then we have the Vijayanagar ruler built a large number of decorated temples. अब हम पढ़ेंगे मुगल पीरियड में मुगल पीरियड को क्या कहा जाता है सेकेंड क्लासिकल एज ऑफ आफ्टर गुप्ता पीरियड okay the larger edifice of Babur have entirely disappeared. Three minor ones have survived, one mosque in Kabuli Bagh at Panipat, another Jama Masjid, Sambal UP, and the third one is Old Lodi Fort at Agra. Then we have शेर शाह सूरी ने फेमस सिटाडल बनाया जिसको पुराना किला कहते हैं जो दिल्ली में है मॉस्क्यू विद इन द वॉल Sher Shah Mausoleum at Sarasam in Shahadabad district, Bihar is a marvel Indo-Museum architecture. Akbar reign saw remarkable development in architecture. Okay, Akbar, we have Akbar fort in Agra. Then he built 500 buildings of red stones, the greatest architectural achievements of Akbar. Fatehpur Sikri. Then we have another one, Shah Jahan. पैट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर तो शाहजहां जो थे वो कला के बहुत ही ज्यादा दीवाने थे और उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है देयर आर अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन द कल्चर फील्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड here we have the case study of them so building places forts garden and mosque at Agra Delhi Lahore Kabul Kashmir Kandahar Ajmer Ahmedabad etc. The structure of Shah Jahan as compared of those Akbar are inferior in garden and originality. This is particularly illustrated in Delhi buildings like Diwan-e-Aam, Diwan-e-Khas. The latter of its costly silver ceiling and mingled decorations at Agra deserve a higher place from the standpoint of true art and purity. Then we have Masjid Jahannama. It is shown of the Persian style. Then we have, though not so famous as Taj, the Mausoleum of Jahangir, built by Shah Jahan at Shandar in Lahore. Dear learner, सबसे इम्पोर्टेंट तो शाहजहां द्वारा फाउंड किया गया बनवाया गया है वो है ताजमहल बिकॉज ताजमहल दुनिया के 8 अजूबों में से एक है इसीलिए ताजमहल जो पोजीशन हेल्ड करते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो कोई नहीं करता है बिकॉज ही हैड फाउंडेड द among 7 wonders of world our Taj Mahal. Then we will read about the gardens. There exists garden in the India before the advent of Mughals, but they were not geometrically designed. But अब क्या हुआ अब गार्डन जो है वो geometrically designed होने लगे बार्बर जो है वो नई स्टाइल लेके आया गार्डन की which had been developed in Persia and Turkestan and whose chief characteristics was artificial irrigation in the form of channel basins or tanks and drop waterfalls and the plan involved series terrace on sloping ground. Then we have Kabul, Babur had built gardens such as Bagh-e-Wafa. Here you can see बच्चों पहले भी गार्डन हुआ करते थे लेकिन जब मुगल आए तो उन्होंने बहुत ही सिमेट्रिकल जियोमेट्रिकल गार्डन बनवाना स्टार्ट कर दिया गया He built garden called Bagh-e-Hasid Dehshat. Akbar patronized 3 important Mughal garden types, the monumental Heath, Bishop Tom set with Charbagh, the garden place, the ruler Kashmiri terrace Tagi. Here we have gardens of Rajput. Now Rajput के gardens कैसे होते थे केवल मुगल नहीं राजपूत भी associated हैं garden से at Qualcha north of Jahangir Mandir place built elephant pavilion overlooking a garden.
Amber near Ajmer had many gardens. Then we have the Amber Fort built by Raja Man Singh, extended by Raja Jai Singh, is the first half of 17th century or excellent garden in Charbagh style. Then we have other structure. Here we have so many other structure also. Now here we have now I know बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़े different kind of development in arc and structure in monuments in different ages. What you have to do, you have to point out any 15 major architect monuments, and you also have to write from which reign and who had built that monuments. That will be your homework. I'll be seeing you in another social studies class. Till then, take care of yourself, do your homework properly, and revise your chapters heartily. We'll be seeing you in the next one. Take care of yourself. Bye bye.